Actually, earlier I never used to believe in spirits until unless I came across the experience of my very well known. उसका बेटा जो था ऑल ऑफ ए सडन उसने स्कूल जाने के लिए मना कर दिया। मॉर्निंग टाइम में वो उठ के कहता था मेरे को बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं स्कूल नहीं जा रहा। किसी दिन बोलता था मेरे को पेट में बहुत दर्द हो रहा है। शी वेंट टू द डॉक्टर, इट हैपेंड 2-3 days। वो फिर उसको डॉक्टर के यहाँ लेके गई थी और डॉक्टर ने कहा, एग्जामिन करके कहा नो एवरीथिंग इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज जस्ट साइकोलॉजिकल कि इसको स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा। बट उसे फिर फोर्सफुली फ्रेंड ने उन्होंने भेजा स्कूल उसको, बट मिड ऑफ द स्कूल उसको वापस लेकर आना पड़ा अपने बेटे को, because they got a call from the school that he is having stomach ache or headache, one or the other excuses. वो कई बार रात को what he used to say, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, तो every time she used to think कि नहीं इसको स्कूल नहीं जाना next morning, so that's why he is speaking like that. Okay, 2-3 days उन्होंने सोचा चलो अब हम उसको स्कूल नहीं भेजेंगे। तो स्कूल का टाइम रहता था तब तक तो वो थोड़ा अनईजी होता था, रेस्टलेस होता था। जैसे स्कूल का टाइम ओवर हो जाता था ही गेट टू लुक नॉर्मल। मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसके बास्केटबॉल थी, वो उसके साथ प्ले करने में बड़ा इन्वॉल्व रहता था। ही यूज्ड टू लाइक प्ले विद दैट बॉल। एक दिन मेरी फ्रेंड ने ऐसे ही उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए, उसको बातों में स्कूल के लिए कन्विंस करने के लिए, शी थॉट कि मैं भी इसके साथ प्ले करती हूँ, थोड़ा सा प्लेफुल मोड में आएगा तो मैं इसको कन्विंस कर दूँ। शी स्टार्टेड प्लेइंग विद हिम विद हिज बॉल, जो उस टाइम उसकी बड़ी फेवरेट बॉल हो गई थी, फेवरेट गेम हो गया था उसका। तो वो प्ले करा, समहाउ उसके साथ बात करी, उसको कन्विंस करा। शी सेंड हिम विद हिज फ्रेंड्स कि चल तू अच्छा बाहर जा, अब हमने थोड़ी देर प्ले करा। व्हाट माय फ्रेंड एक्सपीरियंस कि उसको ना इवनिंग में बड़ा घबराहट होने लगी, बहुत रेस्टलेस हो। घबराहट माने के वो लिटरली कहती थी मैं ना दिल में धुक धुक हो रही। वो थोड़ा डर गई कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे को। somehow रात ही सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर वही रूटीन चला। ऐसे बेटे ने स्कूल जाने के लिए फिर मना कर दिया कि मेरे को डर लग रहा है, मैं नहीं जा रहा। फिर अगले दिन फिर वो मदर एंड सन दे वर प्लेइंग इन द गार्डन। तो उसको फिर से वो उसको लगा कि मेरे को फिर से घबराहट हो रही है। नेक्स्ट वही जो प्रीवियस देखा था प्रोसेस उसको आज फिर लगा कि बहुत घबराहट हो रही है। मतलब घबराहट इतनी हो रही थी कि शी वाज नॉट एबल टू बेयर दैट रेस्टलेसनेस। फिर उसने कनेक्ट करा मेरे फ्रेंड ने कि यही रेस्टलेसनेस, यही घबराहट जो था उनका बेटा भी बोल रहा था कि मेरे को डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। शी वाज वेरी कंफ्यूज्ड। So it was realized that something might be wrong with the ball, and that's why I talked to you. Do you remember? I remember that when she called me, and she told me the entire thing. Even I was not expecting कि reason क्या हो सकता है. So basically, what she told me is to check out. Maybe he's just making excuses, or she was not sure what it is actually. So then she asked me to do Reiki and to check it out. What is happening with him. And when I did meditation and I saw, I was completely shocked because even I was not expecting something like this. So what I saw was in their garden, they have a very beautiful garden where there's nice trees there. What tree it is, I don't know. And while doing that meditation, I saw that one boy, maybe around 9 years or 10 years, with very innocent face, and I still remember his hair, straight hair, very silky and straight hair till here like this. He was wearing some school uniform in some check print. So he was very upset and he was looking very depressed. So what I realized, maybe he committed suicide. So that was the reason. Maybe something what happened, these winds are passing by. So sometimes few kids which are very sensitive, or maybe those bloods are very thin sometimes they say. So these spirits ये बहुत जल्दी उनको catch कर लेते हैं. Catch करना इसे for them spirit, it's like very easy to possess anyone like that.
But then I told her few things, few remedies. जैसे मैंने बताया था कि Actually, I हम्म, remember the first thing you told to her was just to throw out that ball from the house. yeah, that is there. So what basically I told her to remove that ball and to damage it because obviously nobody wanted that ball to have it because that ball was carrying some kind of spirit. And then I told the remedy where I said that make a water with tulsi leaves. So whatever water, because she said he's very fussy about, he won't do anything. So I started giving him healings. And plus I told to put some tulsi leaves daily and basil leaves which is called. वो रोज डालकर उसको जितने भी दिन में पानी को पीता है keep pouring that water in that jar तुलसी leaves के साथ. So let him have. Plus, I told rock salt remedy. That also helped him a lot because that always helps to get rid of any kind of negativity. I told him not to eat any sweet for some time Yeah. because if a person has sweet, that also is one very big thing where spirits they get even more, they get more control on a person. So yeah, so all those things and few more remedies with it, but easy remedies I said. But when I spoke to that spirit a little bit and I wanted to know about it, that's how I got to know that spirit had some issue in the school where ये बच्चा जाता था स्कूल में उसको क्या प्रॉब्लम थी आई हैव नो आइडिया टिल टुडे बिकॉज बहुत ज़्यादा आई डिडंट गेट कनेक्टेड टू द स्पिरिट बट ओनली आई रिमेंबर इज व्हेन आई चेक्ड आउट एंड दैट बॉय गेव मी अ काइंड ऑफ मैसेज दैट उसको स्कूल में ही वाज नॉट कंफर्टेबल तो किस वजह से उसने सुसाइड किया था या तो स्टडीज की वजह से या व्हाटएवर रीजन और I think something related to these kids they call the spirit just that board where they play with the coins. Something happened, right? At midnight, what children used to do, no, they call spirit on a piece of paper using the coin. The kids also did the same thing one night in their lawn. I think midnight they tried this out of fun they did. Yeah, yeah. And Yeah, उसका उल्टा असर ये हुआ कि उन लोगों ने मस्ती में स्पिरिट बुलाई बट दे डिडंट रियलाइज कि स्पिरिट सच में आ गई थी एंड इट स्टेड देयर क्योंकि उन लोगों ने वो जो whatever fun they were having they didn't made an attempt to send the spirit back because maybe they didn't realize कि what game they are playing actually it can cause some spirit because what happens now night time में इतने spirits घूम रहे होते हैं. So sometimes you don't even get to know कि any passing by spirit and if someone is having fun, spirit can come and possess you or they may like you because sometimes what happens they always look for the bodies, spirits. So sometimes when they find any body where they can enter easily, they just do that. That's how normally happens. That's the reason I always say that even night time when someone is sleeping also, you should not leave your windows open. Windows, doors कभी भी open नहीं छोड़ने चाहिए, especially late nights. Because बहुत सारी spirits होती हैं जो कि अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं. Spirits ऐसा नहीं होता कि सब खराब भी होती हैं, but the spirits are spirits. That's it. So उनको entry मिल जाती है. Sometimes they are passing by and they see something open, तो windows में से अंदर आ जाते हैं. Whether they get into your body or they get into your area, into your space. तो कभी भी रात को इसीलिए बोलते हैं कि कपड़े भी बाहर नहीं सुखाने चाहिए, स्पेशली छोटे बच्चों को हमेशा से बोलते आ रहे हैं, पुराने टाइम से ही बोलते आते हैं. सो it's always that because they get the smell of a small kid, so they should not enter somewhere and where they can get the way to enter the body of any kid or any. There are many stories. There was another one where this friend of mine and उनके छोटा बेबी था जहाँ पर ये उनको लगा कि धीरे धीरे कभी भी वो उसका मिल्क बॉटल इधर उधर गायब हो जाता था. आई टोल्ड यू आल्सो अबाउट इट, रिमेंबर कि वो बेबी को मिल्क पिलाते थे और वो थोड़ी देर में ढूंढने आते थे किचन में से कि मिल्क का बॉटल गायब हो जाता था और वो इतना डर गई थी कभी छोटे बेबी के कपड़े गायब हो जाते हैं, कभी कबर्ड में से कुछ मिस हो जाता था या छोटी बेबी की बॉटल नहीं होती थी. Actually, they used to find that things outside, like in the lawn, somewhere outside their house, in the lawn, in the garden.
or at the backyard also. Right. So that time when I did this meditation and I found out that this basically this spirit was of a monkey spirit, और वो बहुत funny था मेरे लिए बताना भी कि ये जो spirit आई है आपके घर में वो एक monkey की है जो कि baby monkey था, and वो monkey इतना playful था कि वो बच्चे के साथ basically खेल रहा था. He was not going to harm that kid. बट ऑब्वियसली पेरेंट्स को तो डर लगता है ना कि घर में कोई स्पिरिट है और वो इधर उधर घूम रही है, कभी कबर्ड में से कपड़े बाहर और होते थे, कभी लॉन में होते थे, या व्हाट. एक्चुअली द स्ट्रेंज थिंग वाज कि वो लोग बिलीव नहीं करते थे इन चीजों में, बट अगर वो मदर ने उसको वॉश करके अभी कबर्ड में रखा है एंड ऑल ऑफ ए सडन आफ्टर 5 मिनट्स उसको कहता है कोई कि वो तो बाहर पड़ा हुआ है उसका बॉटल या उसकी नैपी. So that was actually very strange to her. She also took some time to believe these things. उसको भी पहले नहीं believe हुआ. That's true, and that was the very strange. But anyways, I told them few remedies where I wanted them to, burn some कर्पूरम and all that things, and in entire house की पूरा घर में उसको एक बार उसका देकर wall to wall उसको पूरा उसको एंड उसको बाहर लेकर जाना, घर के बाहर डालना, एंड नॉट टू लुक बैक ऑल्सो. वो सब मैंने बताया था. आई थिंक 7 days का मैंने बोला था उनको नॉन स्टॉप करना, एंड इट वेंट ऑफ फॉर सम टाइम. बट द बेस्ट पार्ट इज उनका एक रेस्टोरेंट था. सो वो रेस्टोरेंट में वो लोग दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट समवेयर इन दिल्ली साइड. okay. So all the way when I mean it must be just half an hour का रास्ता था. So they were working, some renovation work was going on. तो उनका एक टैंक था जिसमें कि वो उसमें बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ था. So जब रेनोवेशन वर्क चल रहा था तो उन्होंने वो जब टैंक को खोला बाय चांस आफ्टर आई थिंक 2-3 months, तो उनको उसमें से एक मंकी बेबी जो कि डेड था वो निकला. They found a dead body of the monkey. Basically, the dead body of a baby monkey. Yeah, that's what they found, and they called me immediately. Chavi, you said it is a monkey baby. That spirit was around, and finally we got rid of it. But now, after a few months, we are finding the body of that monkey baby. That was something strange, and for me also it was strange. One side was like what I have seen, it was correct. That proves me correct. Like somebody should not say कि कुछ भी बोल देते. So that is another thing, and but I think because they used to visit very often to that place, so maybe someday they must have. इसीलिए maybe sometime you carry the bottle of a baby with the baby. इसीलिए बाहर बोलते हैं कि बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए. There are certain things which are said from olden days. हाँ. So I think openly को बोलते हैं कि white चीजें नहीं देनी चाहिए. तो आई थिंक these they have some reasons कि बाहर स्वीट्स नहीं खानी चाहिए आपको चलते हुए, स्पेशली बच्चों के लिए स्पेशली बोली जाती है. आई थिंक दे आर राइट. They have some logic in them. Yes, चीजें जो होती हैं, the whole thing says that supernatural powers do exist. Yes. I mean, I have experience, though I am into Reiki, I am into spirituality, but I never thought that I will be coming across such thing. But when I saw, now though I am expert in seeing all these things, because there are a lot of incidents, there are a lot of stories where people come across to me when they have some issues in their house or something. इस कॉन्वर्सेशन से हम लोग को एक तो लेसन मिलता है. द थिंग इज कि जो अगर हमारे बड़े बोल रहे हैं कि मीठा खा के मत जाओ, वाइट चीजें खा के मत जाओ, या मिडनाइट आप 3 के नीचे मत जाओ, अगर इसको फॉलो करने में हमको कोई हार नहीं है, वी शुड फॉलो ऑल दीस थिंग्स. Yeah, definitely, because होता तो है लेट नाइट्स में आफ्टर 12 o'clock डेफिनेटली स्पिरिट. इसीलिए बोलते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा नेचर को फॉलो करो, बिकॉज नेचर ने जो चीजें बनाई हैं, तो इनफैक्ट व्हेन वी से कि देर रात तक नहीं जागो, या फिर रात को देर में आप व्हेन यू गो आउट मेक श्योर यू आर नॉट कैरिंग एनी स्वीट इन योर हैंड्स. तो ये सब चीजें मैटर करती हैं. डेफिनेटली स्पिरिट्स होती हैं, एंड कई बार वो बस
लक भी ऐसा होता है कि समटाइम यू कम अक्रॉस एनी स्पिरिट. बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं या नहीं करते, बट होते हैं स्पिरिट्स, whether you believe it or not. But fortunately, with the two incidents we were talking about, those spirits were very playful, so they didn't want to harm the person. That is there because there is a story about I don't know. I stay in Chennai और मेरे को मालूम है कि ECR में भी एक जगह है जहाँ से when I was passing by once और मैंने I could feel that there is something. और ECR में बहुत सुना भी है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं ECR में हमारे चेन्नई. There is one particular stretch वहाँ पर काफी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं. मैंने भी फील किया है कि whenever we are crossing that particular stretch, there is something that you can say a kind of demon spirit. जिसमें I still know, I don't know how many people will believe in this, but yes, it is there because I feel that eyes green and they are kind of, how you say that, tiger, not tiger, kind of tiger eyes, but demon eyes. I always see that green color, big one. It's Okay. a triangle like this. So I've seen that behind the bush. I don't know what it is, but yes, Oh my God. So whenever हम रात को वहाँ से आ रहे होते हैं तो आई एम ऑलवेज वेरी केयरफुल दैट स्पेशली लोगों को आई फील आई शुड से कि ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ड्रिंक करके आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए उस स्ट्रेच में, बिकॉज दैट इज वेरी डेंजरस. सो देयर इज समथिंग टू डू विद द डीमन. वो डीमन डिस्टर्ब होता है या उसको कुछ चीजें पसंद नहीं है, सो दैट डीमन ऑलवेज अटैक पीपल इन सम वे वेयर रोड एक्सीडेंट्स टेक्स प्लेस. सो दैट इज Oh my God. So there are spirits good and bad, but the spirits do exist. Sounds very scary and it's giving a goosebumps. Yes, yes. I'm very scared. कभी भी हम लोग ECR जा रहे होते हैं, then अगर late night होता है, तो I make sure at time कि 12 o'clock से पहले आ जाते हैं. Either you stay there or either you come before 12 o'clock because I don't like that stretch. I never like. But you have experienced those eyes. I have experienced because I was once when I was passing by and I think इतने accidents क्यों होते हैं, तो one day I was just trying to find out and I have to get into that mode. It's not that मैं अभी एकदम कोई बोले someone will say and I will just immediately do. I take my time if I want to do something. I have to get into that. But then once I was passing by, I could feel something on my left hand side in the bush. So then that day I realized, check it out, what it is about. So when I saw to me, yes, there is something which is not good. And one has to be very careful not to use any bad language. Yes, that is very important. I don't know. If people are watching this podcast, then they should know कि जो ECR road पे stretch में है, उनको even if they're drunk, they should be very careful. Mostly they should avoid passing that stretch. And they should not use any abusive language, bad language. So I think that stretch, if people are using certain kind of language or something, then things are not very good. That's what I've felt. So, I don't know if someone else has experience. अगर किसी ने experience किया है तो हमें comment करें. We would like to Yes. their experience. Yes. Yeah. This is a topic which everybody wants to talk about and hear about. Yeah. Actually, Although it's very scary to know, but still yeah, it's an it interesting gives you goosebumps. Like obviously, because when you come across certain things, we definitely get scared and we think. But on the other side, we always want to know things like this because they are interesting. Because like बचपन में हम लोग सभी खेलते थे. Definitely हम लोगों ने भी खेला. We still like to watch horror movies. So, but there should be always a limit towards these things because ये थोड़ी scary भी होती हैं and you should be always very careful while playing, especially not to play midnight this what you call that board game people they play. I've come across these kids where when they are into 5th standard, 6th, 7th standard, they come across these new topics. So that time when they talk and they come around and they say if you say something in front of the mirror and ghost can come. And sometimes kids they try also. But I feel कि उन लोगों को try नहीं करनी चाहिए. ये सब चीजें बहुत dangerous होती हैं. Definitely
not good. There are a lot of experiences I have come across when people come and share their experiences. So I would rather say not to entertain such, such kind of, where you want to try out something, like whether say particular words or like these board games where you call the spirit with the coin. These are not good things. So what happens sometimes people take these things as a challenge. No, I'll go, I'll try. Right. So it could be risky also. It is risky. I feel. Why you have to call someone from another world? Why? Exactly. The spirits which are gone, don't call them back, right? Let them come at their own pace when they take another birth or whatever. But when the spirit is gone, let it go. Don't entertain any other spirit from another world and call them. That is right. So, okay, viewers, you share your experiences in comment box. Yeah. Love to know what experiences you have come across. Yeah, most of the people might have come across these experiences. I'm sure. Still scary. Yeah, it's still scary. Let's take care of all these ourselves, and all these activities shouldn't be practiced Correct. even little. Yeah.